बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड मेरी तबीयत भी काफ़ी हद तक बेटर है अब। सो तभी मेरे को ये हाथ की फ़ोटोज़ आई थी, काफ़ी सारे हाथ की फ़ोटोज़ आई थी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको लंबे टाइम तक होल्ड पे रखा, बट सिंस मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो टुडे इटसेल्फ. Okay, so this video gonna be in English because she's getting means you do not understand the Hindi language, so I'll be going to speak everything in English. Okay, so let's dive into it. Okay, so her questions are plentiful. For like, she wants to know about the foreign settlement, about the bungalows, about her life, career, settlement, promotion, and job. Okay, so let's get started. So I'll answer her first question. So her first question is, will she be going to settle in a foreign country or not? To be honest with you, you would definitely, but it would require amount of hard work, and afterwards you would definitely get a chance to settle in the foreign country. And I can see that you would be getting the promotion in your job, and probably it seems like that you would be getting an opportunity from your job itself to get settled in a foreign country. Okay, why? Because so how would I be able to see that you would be able to settle in a foreign country? Because of this thing, since it's reaching to this thing, to your moon mount. Okay, and afterwards you are having this line which is actually almost hit to your fate line, so which states that you would definitely get settled in abroad. Okay, all right, now let's move on to the next question. Her next question was whether she would be getting the promotion in her job. What I believe, she would definitely be getting a promotion in her job. Okay, and afterwards her bungalow gonna take time. I won't say right now, but it might take time, since I can see a triangle right here, which is near about approximately like near about 50s or something like that. But however, it totally depends upon your kundali chart as well. Okay, so 50% I rely on hand, and 50% I totally rely on kundali. Okay, so what I believe, you would be able to make a bungalow, but it will be not too sooner. Okay, it probably be gonna take time, sometimes like around 10 years or so. All right, moving on to the next question. Okay, and then you have a sun line. See how dark it is. It is very good to be dark, but you are actually not getting any fruitful or results or the positive outcome of having a sunline in your hand. Why? Because there are so many lines which are actually cutting these lines. That's the reason it is not fruitful for you. In order to make your sun prominent, I have already told the remedies in my previous videos. If you are looking for the remedies for the sun mount in order to make your sun mount prominent, please check out my previous videos, and that one you would be able to get the remedies how to make your sun mount more efficient. Okay, okay, yeah, if I talk about your communication skills, you're an introvert type of a person, right? You're not willing to communicate with other people, or you're not communicating with other people. You're an introvert type of a person, so I would say do some remedies for your Mercury mount as well, because having an introvert personality, especially when it comes to your job or either your business, it's not a good sign. Okay, so make your Mercury mount more and more prominent, and have already told the remedies in my previous videos. If you are not sure about those remedies, let me know in the messages. Perfect. And I found your this finger and this finger is almost equivalent, which is actually very good, which actually define that you're a great personality, kind-hearted and generous person. So it is actually good. So if your first finger and the third finger, means which we call as the sun finger, and the first we call as a
guru mount fingers. So if these fingers are pretty good, then your personality, it makes your personality very kind hearted, generous, and you always think for the other people before you are doing any action. Okay, you are very family oriented, means you always put your families first when it comes to anything. Okay, and I can see this sign on her hand, which is actually a very, fortunate sign, auspicious sign, I would say. So this is again an auspicious sign, so this sign is very good. Okay, and I would say you should start worshipping your god as well, whosoever is your, means you consider your god is. Okay, doesn't matter, start worshipping them like two times a day. It means it should be a mandatory thing in your life. Okay, so you have to set your timetable according to that, and try to worship your god approximately at 4 a.m. in the morning. If it is very difficult for you, that doesn't matter, you can do prayer anytime during the day, but 4 a.m. time is very prominent in terms of success and in terms of your mentality, in terms of your mental conditions. So whosoever is wants to improve this mount, which we call it as a Brahspat mount or a Guru mount, whosoever want to improve their Guru mount, I would definitely recommend them to get up early in the morning at 4 a.m. and start worshipping God, especially Lord Krishna or Lord Vishnu. When you start worshipping them, you would see the drastic changes coming into your way. Drastic changes in your life will be coming into your way, and your life will totally change. And I'm not kidding, this is on to be on a very serious note, I'm saying this. Okay, I've seen people have changed their life by adopting these small things. These are actually creates a big difference in your life. So I would recommend you to start doing that, and you would experience very positive signs in your life. Okay, for example, what I believe, you're a hardworking lady. Okay, and then your fingers are almost equal to your hand as well, which denotes that you would be getting whatever the amount of hard work you are doing, you would be getting pay for it as well. But in order to make your life more prominent, because there is a lot of struggle I can see in your hand, if you want to make your life struggle less, start worshipping God like 2 times a day at least. Okay, and whenever you are worshipping, worship them with whole concentration. Okay, do not do not include any other thoughts when you're worshipping the Lord Krishna or Lord Vishnu. Okay, all right. Yep, so that's pretty much. I hope I have answered your all questions. And your question was about, according to what is your child attitude, any comments regarding your child. You have one child, right? So your child is a obedient child, I must say. He would be a obedient child, he would always listen to you. Other than that, I can't see any problems. So that was pretty much. And I would say about the money thing in your hand as well. Okay, so I have seen there are certain reasons that you are not able to save the money. Okay, you're earning money, I'm not saying you're not earning money, you are earning money, you're earning handsome amount of money, but you're not able to save that money due to any other reason. So the reason could be anything. Okay, if you are not able to save the money, then please check the water leakage at your house. It might be a great problem of your finances not getting up to mark. Okay, so start taking care of the water. Means water leakage means the finances leakage, means you would be earning money and you would not be saving any money either. Okay, so start keep a check on your water. Okay, other than that, I would say everything looks good to me. And yes, foreign settlement is there in your hand for sure. It might take time and it might take a little amount of hard work too, as well as I can see the foreign settlement coming from your job especially as well. So whatever job you are doing right now, they might put you outside or in a outside country. Okay, so I can see that thing as well. So
Perfect. So I told you the remedies. I didn't told you the remedies. Sorry, but I tell you that you have to do the remedies for you not to make your sun mount prominent and your mercury mount as well. Other than that, it is all good. Okay, I'm now moving on to the next hand. तो अब मैं इस हाथ में बात करूँगी मेल लकी हैंड की, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आपके हाथ ऐसे हैं तो आप बहुत लकी हो, बट ये स्ट्रगल के हाथ भी दिखते हैं। स्ट्रगल के हाथ कैसे दिखते हैं? क्योंकि अगर आप इनकी फिंगर्स कंपेयर करोगे और इनके इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो हाथ की जो विड्थ है, आपकी जो हाथ की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, लंबाई भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। तो आपकी फिंगर्स छोटी है एज़ कम्पेयर टू योर हाथ, ये दिखाता है सीधा सीधा स्ट्रगल। तो ये किसी के भी हाथ में है तो 100% उसके हाथ में स्ट्रगल है, ठीक है, और स्ट्रगल काफ़ी लंबी टाइम तक रहता है, ठीक है, और काफ़ी छोटी एज से आपका जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी के भी हाथ में ऐसा है ना, किसी की फिंगर्स छोटी है और हाथ लंबे हैं, तो उनका लाइफ का जो स्ट्रगल है ना बहुत छोटी एज से ही स्टार्ट हो जाता है। छोटी एज से मीन्स 18 to 19 ईयर्स की एज से आपका जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नाम सुमित है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके हाथ में स्ट्रगल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इन्होंने पूछी है इनकी सेटलमेंट। तो आपके अब्रॉड सेटलमेंट फॉर श्योर है, फॉर श्योर क्यों है, ठीक है। ऑल्दो इनकी भाग्य रेखा काफ़ी फेड है। मैंने ऐसे हाथ पे देखे हैं जो बहुत राइज हुए हैं अपनी लाइफ में विदाउट हैविंग एनी अदर फेट लाइन इन देयर हैंड, ठीक है। तो फेट लाइन होना इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग कि अगर फेट लाइन है देन यू वुड बी एबल टू सक्सेस इन योर लाइफ। अगर फेट लाइन नहीं है यू वॉन्ट बी एबल टू, ठीक है। तो भाग्य रेखा इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग इन अ हैंड। हाँ, भाग्य रेखा अगर हो तो अच्छी बात होती है, थोड़ा आपका भाग्य का सपोर्ट दिखाता है वो, ठीक है, कि आपका जो किस्मत है उसका सपोर्ट दिखाता है। अगर नहीं भी है इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटीज़ देखी है जिनके हाथों में भाग्य रेखा भी नहीं, वो बहुत अच्छे लेवल पे राइज हुए हैं, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड का ही एग्जांपल लूँगी तो वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, शी इज़ एन IAS ऑफिसर एंड विदाउट हैविंग एनी फेट लाइन इन हर हैंड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनके अदर क्वेश्चंस है कि फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली है, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट कैसे? क्योंकि आपकी ये हल्की सी फेट लाइन ये आ रही है और ये यहाँ पे आ रही है, प्लस ये वाली लाइन आपकी ऐसे आ रही है। ये वाली लाइन ऐसे आती तो मैं बोल देती कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसके साथ ये वाली लाइन भी ऐसे आ रही है तो ये दिखाता है 100% आपका फॉरेन सेटलमेंट है, ठीक है। 100%, 100 to 100% आपने बाहर ही रहोगे और इंडिया आते रहोगे टूरिस्ट वीज़ा पे, बाकी आपका जो है लाइफ बाहर ही निकलेगी, ठीक है। प्लस इनकी एक और अच्छी लाइन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इनकी लाइफ में लग रहा है वो सिर्फ स्ट्रगल ही है। उसके अलावा मुझे इनके हाथ में कोई दिक्कत नहीं दिखती। एक छोटी सी रेखा ऐसी आ रही है इनकी, अगर ये रेखा यहाँ पे टच कर जाती है ना, अगर आपके, मैं छोटे से इससे बनाती हूँ, एक सेकेंड। ये छोटी सी रेखा इनके ऐसे आ रही है, अगर ये यहाँ पे टच कर जाती है ये बताती है कि आपकी काफ़ी अमीर घर में शादी होगी, ठीक है। रिच परिवार में शादी होगी आपकी, और जो आपकी वाइफ होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत सपोर्टिव भी होगी आपकी वाइफ, ठीक है। ऊपर से आपकी मैरिड लाइन का भी कोई इशू नहीं है, मैरिड लाइन बहुत अच्छे से है आपकी, ठीक है। तो मैरिड लाइन इज़ अ गुड, बट आपका एक ये दिखाता है कि आपका बिज़नेस सेटलमेंट होने के भी चांसेस हैं। बिज़नेस आप सेटअप कर सकते हो, अगर आप सोच रहे हो बिज़नेस सेटअप करने का फ्यूचर में, सो गो फॉर इट, आई वुड से डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। आप सेटअप कर सकते हो और वो सेटअप भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से सेटअप होगा, ओके। अब इनका बृहस्पति माउंट देखते हैं हम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये भी दिखाता है कि इनके लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट इतना कम्युनिकेट किसी से नहीं करते। रिजर्व टाइप की पर्सनालिटी है, जिनसे पसंद करते हैं उन्हीं से कम्युनिकेट ये करते हैं, ठीक है। बाकी ये यहाँ तक आ रही है तो ये अच्छी बात होती है। उसके बाद ये वाला, अगर ये आपकी ये वाली चीज़ बड़ी हो ना, और सॉरी सन की फिंगर बड़ी होती है तो ये दिखाता है आपका सन माउंट बहुत अच्छा है, ठीक है। हल्की सी मैं आपकी रेखा भी देख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये आपका सन माउंट बहुत अच्छा दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका सन माउंट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आपको बृहस्पति के लिए थोड़े उपाय करने पड़ेंगे, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आपको बनना पड़ेगा, इन द सेंस आप वर्शिप करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2 times a day आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। थोड़ा आपका दिखाते हैं कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ा लैक करते हो, इन द सेंस अगर आपको लीडरशिप के लिए रखा भी जाएगा, ठीक है।
अगर आपको लीडर या कुछ भी बना देते हैं, मैनेजर या लीडर, तो आप अपनी कंपनी को जो है, जो आप अपनी टीम को है, वो लीड नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू लीड योर थीम, मैंने आपको उपाय बताए हैं, ठीक है। आपको बृहस्पति मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंडे को आप पहनो येलो कपड़े, हर मंडे को, थर्सडे को येलो कपड़े डालो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 2 टाइम्स अ डे वर्शिप करना है लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है। कोशिश करिए, अगर आप 4 बजे कर सकते हैं, नहीं तो आप दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। भक्ति दिल से होती है, ना कि टाइम से, तो कोशिश करिए, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपका फाइनेंसेस आ रहे हैं आपके हाथ में, फाइनेंसेस आपके हाथ से जा भी रहे हैं, ठीक है। पानी की तरह पैसा आ रहा है और पानी की तरह पैसा जा भी रहा है, ठीक है। तो ये दिखाता है इस चीज़ को, तो इस चीज़ से आपको बचना है। सबसे पहले आपको जो है घर पे वाटर लीकेज चेक करनी है। कई लोग तो मेरी बातें सुन के हंस भी रहे होंगे कि मैं यहाँ से वाटर लीकेज की कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, बट अगर आप हमारे शास्त्रों में पढ़ेंगे और देखेंगे ना कि जिसकी भी उंगलियों में गैप है ना, उनके घर में वाटर की लीकेज होने का पूरा संभावना है। वाटर की लीकेज को बहुत बुरा माना गया है, ठीक है। तो हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को, हमें हंसना नहीं चाहिए ऐसी बातों पे। वाटर लीकेज को बहुत बुरा माना गया है। वाटर लीकेज जिसके भी घर में होता है, उसके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा साइन होता है दुर्भाग्य का भी। तो आपको अपनी वाटर लीकेज चेक करनी है, वाटर लीकेज नहीं होना देना है, अदरवाइज अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड, ठीक है। वरना उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपना 100% हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप अपना 100% हार्ड वर्क कर रहे हो, पर इस चीज़ के वजह से आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 70,000 इंडियन रुपीज़ कमाते हो, तो 70,000 में से आप सिर्फ और सिर्फ 7,000 ही सेव कर पाओगे। इतना बुरा इम्पैक्ट होता है वाटर लीकेज का, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ पानी की लीकेज पैसे की लीकेज के बराबर है, ठीक है। तो वो मत होने दीजिए अपने घर में, उसको सेव करिए। तभी कहते हैं सेव वाटर, सेव योर फाइनेंसेस, सेव योर लाइफ, ओके। नाउ नेक्स्ट मूविंग, सो ऑल्सो आपकी जो शादी है वो लव मैरिज दिख रही है मुझे, ठीक है। बहुत हद तक आपकी लव मैरिज ही होगी, और जो आपकी वाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, आपको सपोर्ट करने वाली होगी, आपका ध्यान रखने वाली होगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रहा है। ये चीज़ होना भी बहुत ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, दिस इज़ एन ऑस्पिशियस साइन, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन मुझे इनके हाथ में एक और दिख रही है, जो सीधा मैं थोड़ी जूम इन करती हूँ। थोड़ी एडमेंट टाइप की पर्सनालिटी भी मुझे लगती है, थोड़ी ज़िद्दी टाइप की लगती है पर्सनालिटी, ठीक है। जो ठान लिया वो कर लिया, वही करेंगे, ठीक है। बाकी दुनिया जाए बाहर में। और थोड़ी सी एडमेंट स्टबर्न टाइप की थोड़ी पर्सनालिटी है, तो थोड़ा उस पर वर्कआउट करने की भी आपको ज़रूरत है। प्लस यहाँ से अगर एक रेखा आपकी ऐसे उठ रही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी रेखा होती है, ठीक है। ये प्रोग्रेस होती है कि आप शुरू में तो बहुत हार्ड वर्क करोगे, बट बाद में जाके आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर इनका एक पूरा क्लियर आप देख रहे हो यव का साइन बन रहा है, तो ये यव का साइन बनना ही बहुत अच्छी बात होती है आप अपने आप में। प्लस इनका जो थंब की जो लंबाई है वो बहुत लंबी है, तो ये विल पावर को दिखाती है हमारी, कि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितने भी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आएंगे, ही विल नेवर गिव अप, ठीक है। तो जितना आपकी थंब की लंबाई होगी वो दिखाएगी आपकी विल पावर, और ऐसा ही होना चाहिए हमारी लाइफ में। किसी की भी लाइफ गाइस स्मूथ नहीं होती है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स को अगर आप लेके अगर आप करोगे, ठीक है, मैनेज करोगे, अगर आप अपनी नैया पार लगा जाओगे तो लगा जाओगे, अदरवाइज़ उसी में डूब जाना है, ठीक है। उसके बाद पैसा रहेगा आपके हाथ में, ठीक है। बस आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत। पैसा काफ़ी है आपके हाथ में, अगर आप ढंग से मैनेज करके चलोगे। मणिबंध हैं आपके, बट थोड़े से आपको देखोगे तो काफ़ी सारे थोड़ा सा वो हो रहे हैं, टूट रहे हैं। अदर देन दैट आपके हाथ में मैं 3 मणिबंध देख पा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा साइन होता है पैसे के हिसाब से भी, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ एंड सुपर कंफर्ट लाइफ, ठीक है।
लहरदार आपकी मणिबंध रेखाएं हैं, ठीक है। तो दैट इज़ प्रिटी मच सुमित, आई गेस मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, ठीक है। और एक साइन ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा हद तक आपके चांसेस ये होते हैं कि जो जिससे भी आपकी शादी होगी वो फॉरेन में ही आपको शायद मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैंड. Picture and the sky also want me to speak in English. Okay, so I'll be explaining each and everything related to this hand in English. Okay, all right. So I'll start from the first. Okay, so I will show you guys this thing. Okay, see the length of his hand as compared to his fingers, which is actually short. So his finger is quite short as compared to the length of his hand. Okay, and length and the breadth of his hand. So but that denote is the struggle. Okay, so there is a struggle undoubtedly. Okay, second thing is about his moon mount is very prominent, which actually brings a foreign settlement in your life for sure. Okay, this actually, whosoever is having that that moon mount, a bulging moon mount in their hand, that means they would definitely get settled abroad. Okay, so there is a foreign settlement chances in your hand for sure. Okay, and afterwards if we are moving to the another thing, then they won't face that much problems related to their money, in terms of their money. Okay, they would not be going to face any problems related to their money. So the money problem is not in your hand. And the one most auspicious sign I can see in your hand is this thing, which is actually becomes a most auspicious and prominent sign, which makes your Saturn mount very lucky for you. Okay, if you are doing any business related to iron, or if you're doing any jobs, you will definitely get successful, because Saturn mount leads to a business related to iron, or either they are very helpful in terms of job. So if your Saturn mount is good, you would definitely get success in your job as well. Okay, then your mind is very good. Okay, your mind is very sharp. Okay, your mind is very sharp, is very good, and you do so many things. You can take actually so much work out of your mind, and you can also go into the CEO or accountant field if you want to. Okay, there was some sort of struggle I can see in your hand, but that is okay. You will overcome that struggle. That is not an issue. Okay, and I can see here a branch is coming out from your feet line, which actually is an auspicious sign as well. Means your wife will be very good. Her nature, she's very beautiful by heart. Her nature will be very good, and she's very supportive and understanding. Okay, and then your guru mount is very good as compared to your sun mount. Okay, you need to work upon your sun mount, because your sun mount is little flattened and there is no line I can see on your sun mount. Okay, I can see only very fade line, and which is has been crossed by another line as well. So you need to work upon your sun mount. Other than that, it is good. Work upon your personality as well. You seems to be very introvert. Okay, start working upon your personality. You seems to be very introvert. You are not sharing anything with your partner or something like that. Okay, so stop doing that and try to become an extrovert person. Okay, try to communicate with other people as well. If not, then try I have actually shared the remedies of the Mercury mount in my previous videos. In order to make your Mercury mount robust, what remedies you need to do, you can go and check out my previous videos. If you did not find that, let me know in the messages. Okay, all right. Okay, I would also let people know, see one more thing in his hand, which we call as a Mangal
Mangal line. Okay, this is a Mangal rekha, and this is a very good rekha. If you have that long rekha in your hand, that long line in your hand, that means you are actually getting support from the external people. Sorry, from your friends or from your families. Okay, at the time of your need, they are there to help you out. Okay, they will stand with you, and they will be there to help and support to you. They will be there in order to give you a hand. Okay, so having this line is also very good thing, to be honest. Okay, and other than that, everything is good. Alright guys, if you like this channel, please don't forget to subscribe, hit like, and share as much people as you can. Deal is still going on. Ask 25 people to subscribe my channel and get your palm reading at free of cost. You just need to ask them. It is actually not necessary that they should subscribe my channel. If they do, that is very great, but if they do not, that is totally up to them. Okay, and so send those pictures to me on Instagram, and that is it. Perfect. Now I will meet you in my next video with more hands pictures. Okay, bye bye, take care.